Home. Welcome to Prashnottari live with Samarpan sessions. Today is the 10th session. Unfortunately, we will have to suspend this series for a while. Let's see when we can restart it. You can also listen to our Unlimiting Self Talks. That series of talks, they're also on the same lines. Let's see if we can begin someday. So, we have some very good questions today. One is, what is wisdom and how do we gain it? विजडम विज्ञान क्या है? उन्होंने कहते ना ज्ञानी है तो नॉलेज एंड विजडम, हिंदी में ज्ञान विज्ञान. So there's a beautiful saying about it, there's a popular joke about it. To know that tomato is a fruit is knowledge, and to know that this should not be used in fruit salad is wisdom. बहुत सुंदर है कि जब आप जानते हैं कि टोमेटो असल में एक फल है, लेकिन फ्रूट सलाद में टोमेटो को नहीं यूज करना है, तो ये विजडम है. बहुत सुंदर जोक है, मैंने कहीं पढ़ा था. श्री रामकृष्ण देव बहुत सुंदर कहते हैं कि किसी ने दूध के बारे में सुना है, हाँ दूध है, देखा है, लेकिन और कोई है जिसने दूध को पिया है, नियमित पीते हैं, अपने शरीर को स्वस्थ बनाते हैं. यानी when we know something theoretically, we have heard of it, we might even have seen it as a knowledge part. But when you imbibe it, make use of it, then it is wisdom. In our daily life, when you know the right from the wrong, सही है गलत है, सही है गलत है कौन नहीं जानता, छोटा बच्चा भी जानता है. क्लास 5 में आते आते बच्चे जानते हैं what is right, what is wrong. But do you have the strength to implement it? जीवन में क्या इसको हमेशा आप कर पाते हैं? Wisdom is to apply this knowledge. When you apply knowledge, it becomes wisdom. Right and wrong. Because most of us know what's right, what's wrong. Like, you might have heard of many people who said, oh well, I had a lot of potential. My teachers used to say, मेरे दोस्त बोलते थे, अरे तू तो बहुत talented है, लेकिन क्या बतलाए मुझे, मौका नहीं मिला. You will hear this kind of talk many times. Essentially, what they mean to say that they had the knowledge, they lacked wisdom. They couldn't apply it. Naturally, आपका दूसरा क्वेश्चन होगा कि how to apply it. That means how to become a wise person. How to acquire wisdom. Or how do we gain it is there. First thing is, understand the dynamics of a thing. किसी भी चीज में सही यह है, गलत यह है, पहले अच्छी तरह से समझना पड़ता है. अपने उपनिषदों में भी बोला गया श्रवण, listening is very very important. मनन, think deeply and then act accordingly. When you act, you will not succeed. You will fail once, you will fail again, and you will fail again. But mind it, once you fail, it only means that अब आप सफल होने जा रहे हैं. अब आप सफल होने जा रहे हैं. Knowing is very important thing. Thinking over it again and again is the next step. And finally putting it into practice. Let's say, think of smoking. In earlier days, now I have no idea about how the society is moving these days. In earlier days, अगर आप पकड़ा जाते स्कूल में सिगरेट पीते हुए, teachers would give you a nice beating.
And a student would say, never, sir, never again in my life. I am never going to touch it again. And then your parents would come to know about it and they will try to convince you about the ill effects of smoking. Are you convinced? No, you're not convinced. Even if you are convinced, you are not going to put into practice. A time comes for whatever reason, you say, no, enough. I don't smoke. It's not good for me. The problem is very often when people tell you something good, preach you, sermonize you, they're talking universally, they're talking generally. A good teacher will tell that it's not good for you. It may be good for others, but it's not good for you. For example, having a good car, having wealth, having this, having that, having glamour, it may be extremely good in the society. And people are recognized by those things. But I'm a monk. If I keep those things, who will respect me? Let us not talk about those famous preachers who roll in wealth and who have admirers like that. But a real monk, a monk who at his heart is a monk, neither his conscience will permit, nor his genuine devotees, true devotees will tolerate that ये साधु बाबा हो करके कामिनी और कांचन में लोट पोट कर रहे हैं. No, they will not. So it's an individual thing. If you really want to be a great monk, behave like this. If you don't want, it's a different thing. Just in short, there are ignorant people who do not know about the fact. Then there are people who know about the fact, and there are people who apply that. That is, knowing that tomato is a fruit, that's one thing. And knowing that it is not to be put in fruit salad. So that's it. Second question is, why is there corruption problem in India, which is a spiritual center, India being a spiritual country? Why there is so much of corruption? The West is much more practical. Is it not time for us to change? Now, this kind of question we face very often. एक बार मैं कानपुर में था तो एक डॉक्टर्स मीटिंग में hundreds of doctors were there. तो वन लेडी डॉक्टर विदेश से पढ़ लिख के आई थी. उन्होंने मुझे कहा, स्वामी जी, इन अमेरिका आई वाज टोल्ड कि भारत में सारी समस्या का जड़ स्पिरिचुअल रिलीजन है. सारी समस्या, the root cause of every problem in India is religion. What would you say to this? I said, Madam, I grew up in a village and I have a rural background. And my understanding of things when I was a kid was extremely rudimentary. और हम लोग सुनते थे बचपन में गांव में कि घर में सारी समस्या की जड़ महिलाएं होती हैं. And audience laughed and she also laughed and she understood and she says, I got your point. Because महिलाएं समस्याओं की जड़ नहीं होती हैं. They meet in the house. They're in the house. And there might be some quarrels because of them. But they are not the cause. Cause lies somewhere else. Religion is not the cause. Cause lies somewhere else. कहाँ? महाजनो येन गता सपंथा. In the society, समाज में लोग वही करते हैं जो बड़े लोग करते हैं, महात्मा लोग करते हैं. समाज में जो नामधारी हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये लोग जो करते हैं, बाकी लोग वैसा ही करते हैं. आज के समाज में अग्रणी कौन है? किनका नाम प्राय
अखबार के मुख्य पृष्ठ पर आता है जो फ्रंट पेज, आप खोल के देखिए अखबार में किनका आता है? फिल्म स्टार, स्पोर्ट्स स्टार, सम करप्ट पॉलिटिशियन और सम किलिंग, सम मर्डर, इन्हीं लोगों का। किसी भी अच्छे आदमी का आता है समाचार पत्र में एवर? नो। एंड स्लोली वी आर taking that garbage every day inside us, and we think that people who come on the first page, front page, they are the important people, and they are famous people, and they have money, they have this, they have that. I also want to be that. In earlier times, even 50 years ago, the ideal of India was knowledge and त्याग, विद्या और त्याग, ज्ञान और त्याग। शायद आपको विश्वास नहीं होता हो, कुछ नहीं, अगर आप नहीं जानते हैं, घर वालों को पूछे आपका गोत्र क्या है? व्हाट इज योर गोत्र? जस्ट गो एंड आस्क। और फिर इंटरनेट पे सर्च कीजिए, जिस ऋषि के नाम पर आपका गोत्र है, उनका जीवन क्या था? डेडिकेटेड टू विद्या, तपस्या, त्याग। आप उनके वंशज हैं। आप चोरों के वंशज नहीं हैं, आप लुटेरों के वंशज नहीं हैं। ये समाज में जो गंदे गंदे काम कर रहे हैं, गंदी हरकतें कर रहे हैं, और अर्धनग्न कपड़े पहन के नाच रहे हैं, नचा रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं, इनके वंशज आप नहीं हैं। आपके वंश में कभी किसी ने ऐसा नहीं किया है। कुछ तो कुछ तो सम्मान करें अपने पूर्वजों का। करते हैं क्या? नहीं करते हैं, क्योंकि हमारी आंखें चुंधिया जाती है। वी आर सो dazzled. There's so much of glamour all around us. We are dazzled, and that's why we go wrong. And then we want shortcuts. We have forgotten our own heritage. For example, on our this channel YouTube, this is what we are trying to say. Well, this is your heritage. See if you can practice it. And many people have said, Swamiji, you don't have any glamour. आप तो एक बार विदेश भी नहीं गए। अरे विदेश तो दूर की बात है, मुझे पासपोर्ट तक नहीं है और न करवाना है मुझे। और ये इसमें सुनना है, सुनो। ज्ञान की बातें लेनी है, लो, नहीं लेनी है मत लो। जाओ विदेशी लोगों से सुनो, जो योग बोल भी नहीं सकते, योगा बोला करते हैं। अभी उस दिन मिला एक सज्जन से, बहुत प्यार करते हैं मुझे, लेकिन बोले, स्वामी जी मैं आपके पास आया हूं सीखने के लिए वेदांता। मैं बोला, हे भगवान, योगा तो बर्बाद किया था, वेदांता भी हो गया। वेदांत नहीं बोल पाते हैं। आपके अपने लोग जिस भूमि से योग और वेदांत निकले हैं, उसको वहीं के लोग बोल रहे हैं योगा, वेदांता, रामा। रामा का अर्थ होता है औरत, कृष्णा अर्थ होता है द्रौपदी। क्या दुर्वस्था है समाज की, आप सोच सकते हैं? आज हिंदू धर्म की क्या दुर्वस्था है, आप सोच सकते हैं? कहते हैं चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, लेकिन नहीं, डूबना नहीं चाहते हैं। हम लोग जिंदा रहना चाहते हैं और किसी तरह से कमाई करके बस पैसा, क्योंकि लगता है अगर पैसा है तो मेरे पास सब कुछ है। हमारे समाज में पहले वैश्य जो धन की रक्षा करते थे, इनका स्थान तीसरा था। सबसे ऊपर विद्या, शक्ति, क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य। धन जो है आज सबसे ऊपर आ गया है। अब सब तो धनी हो नहीं सकते इस समाज में, तो लोग तो करप्शन करेंगे ही। वैसे यह कहना बहुत गलत है कि करप्शन केवल भारत में है। अगर आप लोग समाचार पत्र पढ़ते हैं, समाचार रखते हैं, जापान जैसे देश में प्राइम मिनिस्टर्स बदल जाते हैं भ्रष्टाचार के कारण। अमेरिका, यूरोप, सब जगह भ्रष्टाचार है, सब कुछ में भ्रष्टाचार है। हम लोग गरीब देश हैं, लोग हम पर कीचड़ उछालना पसंद करते हैं। नहीं, गांव में कहते हैं, गांव में गरीब की लुगाई सबकी भाभी। जो गरीब की बीवी है ना, उसे सभी हंसी मजाक कर लेते हैं। बड़े घर की जो उससे जरा सा करके देखे तो उनको देख के हाथ जोड़ के प्रणाम करेंगे। अब हम लोग गरीब हैं, जिसको जो मर्जी हमारा मजाक उड़ा लेते हैं। व्हाट कैन बी से।
एंड सेकेंडली दिस करप्शन प्रॉब्लम वॉज ऑलवेज देयर इन इंडिया. महाभारत में भी हम लोग देखते हैं कि सावधान किया जा रहा है कि युधिष्ठिर युधिष्ठिर राजा थे. योर ऑफिशियल्स may become corrupt if you don't keep a strong watch. तो ये तो संसार जो हमारे समाज में बड़े हैं, जिनके हाथ में क्षमता है, उनका काम है कि कैसे संभालें. लेकिन इस इन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है कि जो वैल्यूज एंड वर्च्यूज होते हैं, ये एक्सट्रीमली सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, यूनिवर्सल नहीं होते हैं. इसीलिए आपको एक कदम उठाना पड़ेगा. वैल्यूज एंड वर्च्यूज में you need to be the center of the change. Center. If you are the center of change, some people may gravitate towards you. Some people may change. So be the change that you want around you. Don't criticize. People will be like this. समाज कीचड़ में नहा रहा है, कोई लाभ नहीं उन्हें बोल करके. आप स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें, प्रसन्न रहें, और आपको देख करके दो लोग और भी हो सकता है सामने आ जाए. Now, before we go to the third question, there is Anup's story. Don't know what's the meaning of Anup's story. It's my humble. ISKCON always criticizes Swami Vivekananda and talker. As a result, many people are puzzled for their bad intentions. Harmful. Anup's story, whosoever you are, I have absolutely no idea about what is ISKCON, who are they, what they do. I have absolutely no idea. I have heard there is something called ISKCON. I have absolutely no idea about what they are. So I cannot. Now, as for criticizing Sri Ramakrishna and Swami Vivekananda, well, it's in the nature of human beings. See, look here. For example, all those people listening right now, it shows more than 50. And now there is my good friend Sanjeev Sinha there, and there is also Amit Singh. Do you people criticize a rickshaw puller? No, you don't. Do you criticize an auto driver? No, you don't. Do you criticize a beggar? No, you don't. Beggary, yes. Beggar, no. Do you criticize the Prime Minister? Yes. Do you criticize the Chief Minister? Yes. You criticize people whom you consider superior. So if somebody is criticizing Sri Ramakrishna and Swami Vivekananda, it simply means that these people consider Sri Ramakrishna to be superior, and they want that Sri Ramakrishna and Swami Vivekananda be brought down to the level, to their level, so that they can feel comfortable. बस ये सी बात है. अब इसमें क्या बोलना है मुझे? अब क्यों क्रिटिसाइज करते हैं, क्या करते हैं, मुझे कुछ नहीं पता है ISKCON के बारे में. आई कैन नॉट टेल यू एनीथिंग. I know nothing who founded or anything. No. I am pretty ill-informed about societal things. Oh, that's my weakness. I can say nothing about it. And then there's a beautiful question. Is it okay to pray to different gods for different things, like Hanumanji for fearlessness, Ma Saraswati for Vidya? And is it okay to pray to God for material success? इस तरह के प्रश्न बहुत बार आ चुके हैं कि अलग अलग देवी देवता की क्यों पूजा की जाए. पर्टिकुलरली कुछ धर्मों में वो लोग बोलते हैं ना, एक ही भगवान है, वही पूजा करेंगे. But you need to understand, in Hindu religion, what is Mother Saraswati? What is Mahavir Hanuman? What is Ma Durga? They're all infinite, Anant. But with a particular characteristics. Because infinite means infinite existence, infinite knowledge, infinite love, infinite aspects. When that infinity, that means knowledge aspect, Satchidananda Chit, when this Chaitanya aspect appears in personified form, Saraswati is God. I mean, goddess. It's the same thing. There's no difference. Mahavir Hanuman, he is God. Then you say, Ram Kaj Kari Bhai Ko Atur, Ram Kaj Karne Ko. Yes, in this world, Mahavir Hanuman
came to serve Sri Ram. Who can serve God? Only the infinite can serve the infinite. Finite cannot serve the infinite. It's out of love. Now, second thing is, should we worship? Well, Sri Ramakrishna, who is the ultimate personification of whole of spirituality, he worshipped Mother Kali, he worshipped every other form of God, and he talks about different aspects of God. Swami Vivekananda himself, who was a Brahmagyani, who was brought from the highest Saptarshi Mandal by Sri Ramakrishna to preach humanity, to preach to humanity. He made pranams to Mother Saraswati before getting up in the World Parliament of Religions when he started Sisters and Brothers of America. So definitely there is nothing wrong with it. The thing is, these greats, the spiritual enlightened, they worship various forms of God out of love. And we the ordinary, we worship God either out of ignorance or out of greed. Is there anything wrong with that? Nothing wrong with that. अगर मुझे मांगना ही है, मैं बड़ी शक्ति से मांगूंगा. ये टुटपुंजिए, ये जो 2 पैसे के लोग, इनसे क्यों मांगने हैं? और वो बड़ी बड़ी बातें भगवान से मांगो. नथिंग रॉन्ग विथ इट. मैं उनसे मांगूंगा जिनसे मैं कंफर्टेबल हूं. No, you may not be comfortable with all. For example, when I think of Sri Ramakrishna, who is my Easter, I feel ashamed asking for something, like Vidya and Shakti. So whenever I feel that I'm going a bit down on my courage, down on my high energy level, I start doing Hanuman Chalisa. मैं करता हूँ हनुमान चालीसा. 1 महीने तक हनुमान चालीसा करो, शक्ति आ जाती है, फिर बोलते हो अच्छा हनुमान जी फिर मिलेंगे करके I keep it. You can say that. अच्छा बिजनेस है मेरा. Yes, पक्का. Whenever I am in need of brilliance, I mean academic thinking, I pray to Mother Saraswati. Sri Ramakrishna is my Easter. Sri Ramakrishna is God. So is Mahavir, Hanuman. So is Mother Saraswati. The idea is stay united with the infinite. Whether that be through ignorance, be that through greed, or be it out of love. Stay united with the infinite and you will become infinite. So here we end today's session. Thank you so much. And as I said in the beginning, this question, Prashnottari, will remain suspended until further notice, till we can come up with it again. And we are planning something very big in this session. You'll come to know of it through our YouTube notification soon. Thank you so much. Thank you.